आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल है और आप लोगों को, और मेरी वॉइस भी आ रही है, तो हम आज चलते हैं अपनी इंडियन फिलोसफी के ऊपर। आवाज़ आ रही है? मेरी स्क्रीन विजिबल है? प्लीज़ एक बार बता दीजिए। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक। ये अपना सिलेबस है इंडियन फिलोसफी का। आज हम चारवाक से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं अगर चारवाक हो गया तो जैनिज्म पे भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेंगे। चारवाक के अंदर ओनली टू थिंग्स आर मेंशन्ड, थियरी ऑफ नॉलेज एंड रिजेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। थ्योरी ऑफ नॉलेज के अंदर वो पूछेंगे, तो आज हम यही बात करेंगे। थ्योरी ऑफ नॉलेज के अंदर बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस क्या है, ट्रांसेंडेंटल एंटिटीज को उसने कैसे रिजेक्ट किया है, और ये दो हम बातें समझ जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली जो उसकी बात की बातें वो तो हमको ऑटोमेटिकली आई जाएगी। तो ये सिलेबस में सब के अंदर अटैच करता रहूँगा ताकि आप सिलेबस को भी देखते रहें कि क्या टॉपिक्स मेंशन्ड है। देखिए, चारवाक फिलोसफी है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोकायता। सबसे पहली चीज तो यू नीड टू नो कि चारवाक को ऐसे लिखना है हमेशा। नेवर राइट चारवाक, अवॉइड राइटिंग चारवाक, अवॉइड लाइक राइटिंग लाइक दिस, राइट चारवाक आई गेस ऑलवेज। और लोकायता दर्शन, why they are called charvak? There are many theories, because charu, it is called charu because they are talking about sweet things, the things which please the common man. Be happy, eat drink and be merry, ये सब बातें करते हैं। तो कुछ लोग बोले कि इसलिए चारवाक थे। दूसरा कारण ये है कि देयर फिलोसफी इज एनकैप्सुलेटेड इन 4 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। एंटायर फिलोसफी इज एनकैप्सुलेटेड इन 4 स्टेटमेंट्स। इवन जब इंटरव्यू में भी कोई चारवाक के बारे में आपसे पूछे कि टेल मी अबाउट द फिलोसफी ऑफ चारवाक, इफ यू ओनली टेल दिस 4 स्टेटमेंट ना, दे विल अंडरस्टैंड। मतलब इफ यू नीड टू एलैबोरेट इफ दे वांट, बट ये 4 स्टेटमेंट में ही पूरी फिलोसफी उसकी एनकैप्सुलेटेड है। एंड व्हाट आर दोस 4 स्टेटमेंट्स? यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कृतं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये 4 स्टेटमेंट्स है जिनके अंदर पूरी फिलोसफी एनकैप्सुलेटेड है। यावत् जीवेत् सुखम जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। Okay, so these are the 4 statements. What do they mean? Yavat jive sukham jivet, be happy till you are alive. Ridam kritva gitam pivet, even if you have to borrow to enjoy, don't compromise on enjoyment, you can borrow also, very much like the today's EMI culture. Basmi bhutasya dehasya, when these 4 they believe in some elements, 4 elements, and when these 4 elements are disintegrated, this body is made up of 4 elements, and when it is disintegrated, punaragaman kota, there is no return, no returning to the world. Entire philosophy, their ethics, their metaphysics, their epistemology, everything is encapsulated in these 4 statements. Be in the moment is the motto of Charvak philosophy. So you need to remember all these statements. Now the thing is, in Indian philosophy, C.D. Sharma writes that materialism, Charvak represents the materialistic tendencies in Indian philosophy. Materialism in Indian philosophy has never been a force. You can see entire Indian philosophy, materialism, even if it was there, it was only in the context of the Vyavaharik term, and it was ultimately
subjugated by the Paramarthic level. But Cārvāka believed only in the Vyavaharic level, that is practical reality, because other things are not perceived. So it was born in discontent, it soon died in serious thought. This has been written by C.D. Sharma. You can use it in conclusion part also, or it can be a question also in itself, that materialism in Indian philosophy has never been a force, born in discontent, it soon died in serious thought. Discuss. You can write this question today, na, if you want. This question alone. Now, what is the theory of knowledge given by Cārvāka? In Datta Chatterjee, it is written that the entire philosophy of Cārvāka may be said to depend logically on their epistemology. Their epistemological view influences their metaphysical view, their ethical considerations. Everything is dependent on their theory of knowledge, that is epistemology. So the main question is, what is the main problem of epistemology? Ultimately, ज्ञान मीमांसा की मुख्य जो मुख्य प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं? तो आप देखो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है how far we can know the reality, to what extent we can know the reality, how does knowledge originate and how does it develop, origination and development of knowledge. ठीक है? You can say the limits of knowledge, origination and development of knowledge, and what are the sources of knowledge. These are the three main foundational questions of epistemology. So whenever there is a question on theory of knowledge or anything, you need to address these three parts. These are mentioned in this Datta and Chatterjee book, right? So we'll see how far we can know the reality, how does knowledge originate and develop, and what are the different sources of knowledge as per Cārvāka. In Indian philosophy, Prama is called as valid cognition. So there can be invalid cognition also. We will discuss this when we will talk about the other sources of Indian philosophy. But for the moment, remember that Prama means valid cognition, and the source of this valid cognition is called as Pramana. The source of valid cognition is called Pramana. And as per Cārvāka, there is only one Pramana, that is perception. That is perception, Pratyaksha. And with respect to Pratyaksha, they say it is Indriya Sanikarsh. Indriya Sanikarsh. You need to use these terminologies because सिर्फ इसलिए मैंने terminology ही इस्तेमाल की है यहाँ पे, बाकी सारी चीजें आपको पता ही है, कहानी, स्टोरी. इंद्रिय सन्निकर्ष मीन्स बता सकता है? Sense object contact. Yes. Sense object contact. Sense, there is sense, there is object, and there is contact. Okay. Sense object contact is Indriya Sannikarsh. So there can be two kind of Indriya Sannikarsh, the internal Indri, that is Mana, and the external, the five senses and physical object, and also the with regard to activity of mind. For example, when I feel hatred, pleasure, pain, all these are internal perception. So Cārvāka would believe in internal perception also, because when he talks about enjoyment, who enjoys, how he knows that I am enjoying? Through internal perception only. Okay? So there are two kind of Indriya Sannikarsh, the external perception and the internal perception. So ये सबसे पहले ये बात समझ गए हम, प्रत्यक्ष को मानता है चारवाक. Now let's see. जस्ट रिमेंबर ना कि मैं लास्ट में ये डिस्कस करूंगा, ये जो श्लोक है आपसे, मुझे मैं याद रखूंगा या फिर आप याद दिला देना. ये क्रिटिक के तौर पे हम इसको मेंशन कर सकते हैं चारवाक के. ठीक है. रिजेक्शन ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ नॉलेज. नाउ सी, अदर सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट इज इन्फरेंस ओनली. न्याय फिलोसफी प्रेजेंट्स इन्फरेंस इन टर्म ऑफ 5 syllogistic members, 5 syllogistic propositions members.
सबसे पहला है इसमें प्रतिज्ञा, इंद्रिय, सॉरी इन्फरेंस, यू नो, अनुमान, 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 anu means after, man means knowledge. After knowledge means knowledge which is after, which presupposes some perception. So it is a knowledge which is after perception, anuman. ठीक है. And with respect to anuman, the main theory was given by Nyaya philosophy. They had given 5-member syllogistic argument to prove anuman. Anuman is valid source of knowledge. ठीक है. सबसे पहले वो बताते हैं प्रतिज्ञा. What is pratigya? Let's take an example of this, the classical example of smoke and hill. In the mountain here is called the minor, that is paksh, right? The smoke, sorry, this is the smoke. Smoke is the visible part, the perceivable part, which is the middle. And with the relationship between this minor and middle, we need to know the major. The sadhya is called sadhya. So how sadhya will be proved? How Nyaya philosophy will prove that the perceivable smoke, perceived smoke is invariably a result of fire. So they will try to explain this with 5 syllogistic arguments. The first one is pratigya. इसको बोलेगा the hill is fiery. ठीक है. They will start with this main proposition. The hill is fiery. This is called pratigya. Hetu, because it is smoky, right? Then they will give example, udharan, and try to establish the vyapti. Wherever there is smoke, there is fire. Example they will give of kitchen. In kitchen we have seen that whenever there is smoke, there is fire. And from this statement they are trying to establish the vyapti, the invariable concomitance between middle term and major term. Invariable concomitance. And Cārvāka will attack this invariable concomitance wala part. In Upanaya they will say that this hill has smoke which has invariable concomitance with fire, right? Yes, ये हमको पांचों लिखने हैं, 1 2 3 4 5. It is very important. The students do not write this. जब भी वो चारवाक का करते हैं discussion, they do not write this. Even if the question, let's say, is on, that once asked the question, all men are mortal, Socrates is a man, therefore Socrates is mortal. What is problematic regarding this statement as per Cārvāka? Right? So you could have presented this also in the form of this 5 syllogistic argument, pratigya, hetu, udharan, upnay, nigman, and criticize the relationship between them. फिर आता है nigman, which is the conclusion that therefore there is fire on this hill. The hill is fiery because it is smoky. Wherever there is smoke, there is fire. Example kitchen. This hill has smoke which is invariable, which has invariable concomitance with fire. So on the basis of this, we draw conclusion that therefore there is fire on the hill. This is how
Nyaya philosophy has presented the things. Now Cārvāka observes one thing ना, एक चीज ऑब्जर्व करता है चारवाक कि ये जो पूरा सिलोजिस्टिक आर्ग्यूमेंट है, इसमें अगर मैं सिर्फ एक जगह अटैक कर दूं, दैट इज दिस व्याप्ति. दिस व्याप्ति इज द नर्व. व्याप्ति क्या है? नर्व ऑफ दिस एंटायर सिलोजिस्टिक आर्ग्यूमेंट. If I am able to destroy this or break this pillar, if I am able to break this pillar, na, then the entire building of inference will collapse. It is very much like what G.E. Moore did. Moore tried to break the pillar of idealism by attacking this essayist percipi. He also believed कि अगर मैं essayist percipi से पूरा आइडियलिज्म को भी अगर ध्वस्त नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट आई कैन, बाय ब्रेकिंग दिस पिलर, आई कैन टिल्ट द बॉडी ऑफ आइडियलिज्म. सो सिमिलरली चारवाक भी ये कर रहा है कि व्याप्ति को अटैक करके इट इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द एंटायर अनुमान. राइट? तो व्याप्ति पे अब अटैक करेगा चारवाक कि योर एंटायर इन्फरेंस डिपेंड्स ऑन व्याप्ति. नाउ टेल मी, हाउ डू यू प्रूव व्याप्ति? अब यहाँ पे आप लोग कैसे को बताना चाहे तो प्लीज बताइए कि क्या आर्ग्यूमेंट देता है चारवाक. यहाँ तक समझ रहे हैं सब बातें या फिर किसी को रिपीट करवाना है? समझ में आया ना अभी तक कि कैसे चल रही है? हाउ इट इज फ्लोइंग. ही ट्राइंग टू अटैक व्याप्ति. सो ही विल आस्क, हाउ डू यू प्रूव व्याप्ति? व्याप्ति कैन नॉट बी प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेप्शन. Why? Because this sentence says all cases of smoke are cases of fire, or it says wherever there is smoke there is fire. Now can you perceive this all cases? We are not able to perceive even the present cases. Present cases भी हम perceive नहीं कर सकते. And all means past, present and future. Present cases भी possible नहीं है प्रूव करना. And they say कि all cases. Hence, व्याप्ति cannot be proved through perception. Now see, इस पे न्याय philosophy will counter. Now न्याय philosophy will counter. This is very important because an examiner can ask this also. न्याय फिलोसफी इस पे काउंटर करती है चारवाक को, एंड दे से दैट व्याप्ति कैन बी प्रूव्ड बाय परसेप्शन. कोई बता सकता है कैसे बताते हैं वो? सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष. यस. बिकॉज द रिलेशन बिटवीन टू आइडियाज, द आइडिया ऑफ स्मोकीनेस and that of fireness can be perceived, and there is a special kind of perception that is samanya. सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष. Samanya Lakshan Pratyaksh can prove this. Now again Cārvāka will counter. And how do you know कि कैसे counter करेगा Cārvāka? This is very interesting. Cārvāka will also counter this. It is a very, very interesting debate. कि Cārvāka attacks Vyapti on the basis of perception, then Nyaya replies, and then Cārvāka counters again. Cārvāka says that भैया अभी बताओ, कैन यू परसीव आइडियाज? न्याय बोलता है कि रिलेशन बिटवीन टू आइडियाज कैन बी परसीव्ड. आइडियाज इज व्हाट? द सामान्य.
है ना, जैसे कि हमारा वो प्लेटो बोलता था सामान्य कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाली बात, यहाँ पे भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वाली बात है. तो चारवाक will say that we cannot perceive ideas. We cannot perceive ideas. So how can we say? So how can we perceive relation between two ideas? जब आइडियाज ही परसीव नहीं होते तो उनके बीच में रिलेशनशिप कैसे परसीव होगा भाई? Hence व्याप्ति cannot be व्याप्ति cannot be established by perception. ठीक है. This entire debate can be asked in a 10 marker. Perception और चारवाक और न्याय का डिबेट. ठीक है. ऑन व्याप्ति की व्याप्ति cannot be proved on the basis of perception. Now Cārvāka asks, now see one more thing before testimony. There are few more arguments. So second is, he says that vyapti cannot be proved on the basis of perception, but can vyapti be proved on the basis of inference? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी, कोई बताए? If we try to prove vyapti on the basis of inference, what would be the problem? Fallacy of infinite regression. Yes. Fallacy of infinite regress. Very nice. Infinite regress. Now how? You can draw like this. If to prove vyapti, you depend on inference. ठीक है? But inference itself depends on vyapti. Then to prove vyapti, you need inference, and this can lead to infinite regress. Right? Further, he says that inference also suffers from, so this ये तो अपना पहला हो गया. ठीक है, ये अपना पहला हो गया fallacy of infinite regress वाला. fallacy of infinite regress वाला. दूसरा होता है अपना fallacy of petitio principii. ये मुझे बताए कोई, fallacy of petitio principii कैसे आएगी इसके अंदर, और ये क्या fallacy है? What is this fallacy and what this fallacy is about with respect to this? बता सकते हैं कोई? So the conclusion is already assumed in the premise. Definitely, circularity है यहाँ पे. The conclusion is already assumed in the premise, which is itself yet to be proved. ठीक है. So जो first sentence है, let's see this one. The hail is fiery. It is still yet to be proved, and you say that it is the premise. And what you say in conclusion? Therefore, the hill is. Therefore, there is fire on the hill. So there is circularity, right? There is circularity. Petitio principii. So this you can say. So ये दो fallacy आनी चाहिए. देखो, हम philosophy में सबसे बड़ी बात क्या है? Epistemology के अंदर सबसे बड़ी चीज है लॉजिक, और लॉजिक में भी सबसे बड़ी चीज है कि क्या लॉजिकल है और क्या इलॉजिकल है. तो इलॉजिकल में सारी लॉजिकल फैलेसीज आ जाती हैं, तार्किक त्रुटियां. ठीक है. तो जो भी फैलेसीज है उनको हमको मेंशन करना चाहिए. इससे हमारी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिखती है टॉपिक के बारे में. ठीक है. इसके बाद आता है कैन, फिर इन्फरेंस के बेसिस पे तो उसने हटा दिया कि इन्फरेंस के बेसिस पे नहीं हो सकता. अब थर्ड आएगा कि भाई क्या आप इसको टेस्टिमनी के बेसिस पे प्रूव कर सकते हो? टेस्टिमनी, शब्द प्रमाण. शब्द प्रमाण. So what will Cārvāka say?
So he understood testimony as a variant of inference only. Inference only, no? Shabda Praman itself is a form of inference. Why? Because see, there can be two kind of Shabda Praman. Testimony can be of two type. Verbal testimony or written testimony हो सकती है. Verbal testimony, we have to assume that the person is trustworthy. Trustworthiness has to be assumed. Then assumption is what? Inference. And inference has already been rejected. It is already under suspicion. Inference खुद ही suspicion में है, तो वो कैसे आ सकता है किसी चीज को प्रूव करने के लिए. Then written testimony, यहाँ पे वो बेसिकली वेद की बात करते हैं. तो वेद तो है क्या? कनिंग प्रीस्ट. ठीक है, कनिंग प्रीस्ट की बात करते हैं कि कनिंग प्रीस्ट हैव मेड written the Vedas for their own benefits, so we cannot believe in their testimony. So written testimony is also rejected. Now you see, Cārvāka also says one more thing. Cārvāka says that किस वर्ड्स को हम बिलीव कर सकते हैं. अभी इस चीज को समझना है. बिल्कुल आप लॉजिकल पॉजिटिविज्म देखेगा आपको यहाँ पे चारवाक के अंदर. वर्ड कौन से वर्ड को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं विच हैज मीनिंग. मीनिंग मतलब कोई फैक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है वो आउटसाइड. ठीक है. और जिन वर्ड्स का कोई फैक्ट आउटसाइड नहीं है उनको तो हम एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते. जैसे कि गॉड के रिलेशन में कोई बात आ गई, सोल के रिलेशन में जो बात आ गई, रीबर्थ के बारे में कोई बात आ गई, तो जहाँ पे करस्पॉन्डिंग फैक्ट है उनको तो हम वर्ड को फिर भी, क्योंकि वो वी कैन परसीव ना, यहाँ पे ये परसेप्शन से हो जाएगा. टेस्टिमनी एक ऐसी भी होती है जहाँ पे परसेप्शन से वी कैन वेरीफाई इट. तो चारवाक में टेस्टिमनी के अंदर वेरिफिकेशन लगाता है प्रिंसिपल चारवाक. अगर वेरिफिकेशन हो सकता है थ्रू एक्सपीरियंस, बिल्कुल एक्सपीरियंस के थ्रू अगर वेरिफिकेशन हो सकता है तो इट इज मीनिंगफुल फॉर चारवाक. अदरवाइज इट इज मीनिंगलेस. बिल्कुल जैसे कि आपने लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहता है. ठीक है. नाउ सी, जैसे कि हम देखें यहाँ पे व्याप्ति में अगर लगाएं टेस्टिमनी कि कोई लेट्स से कि कोई इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट ने हमको बता दिया कि देयर इज अ इनवेरिएबल रिलेशनशिप बिटवीन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म, द फायर एंड स्मोक, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू, व्याप्ति होल्ड्स ट्रू. बट द believing that the acceptance of scientists verbal testimony is also a kind of inference for Cārvāka. Now see, fourth one is Upaman. Upaman, that is comparison. Can vyapti be proved on the basis of comparison? What is the problem here? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? चार्वाका एक चीज बोलते हैं कि उपमान का जो देखो क्लासिकल एग्जांपल है ना हमारे भारतीय दर्शन के अंदर, वो है एक व्यक्ति है, वो जंगल में गया और जो फॉरेस्टर था उसने उसको बोला कि देयर इज अ एनिमल हियर, एनिमल कॉल्ड नील गाय. एक नील गाय टाइप में एनिमल है. तो नील गाय के बारे में हमने सुना नहीं था कभी, हमने देखा नहीं था सॉरी उसको. तो द फॉरेस्टर गेव एन एनालॉजी कि इट इज सिमिलर टू, यहाँ पे सिमिलैरिटी की बात होती है, सिमिलर टू काउ. इट इज सिमिलर टू काउ. Now this is the classical example of Upman in Indian philosophy. Now Cārvāka says, what would Cārvāka say? Cārvāka say that to believe in the words of forester. So Upman wants us to believe on verbal testimony. Cārvāka ऐसे बोलता है, उपमान जो है हमको वर्बल टेस्टिमनी पे प्रूफ के बेसिस पे डिपेंड होने के लिए बोलता है. एंड वर्बल टेस्टिमनी अगेन itself has been rejected because it depends on inference. So ultimately Upman also depends on inference only. So
उपमान कैन ऑल्सो नॉट प्रूव द व्याप्ति. सो है चार्वाका ने हर चीज हर बेसिस पे प्रूव कर दिया कि चार्वाक ने प्रूव कर दिया कि व्याप्ति कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड. नो सोर्स ऑफ नॉलेज कैन एस्टेब्लिश व्याप्ति. Hence, he rejects Vyapti, which is the nerve of Vyapti is the nerve of inference. ये नर्व थी इन्फ्रेंस की और नर्व को उसने डिमोलिश कर दिया. यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो हम क्रिटिसिज्म पे आएंगे, फिर उसकी मेटाफिजिक्स पे आएंगे. मेरे को बस आपको ये जो कीवर्ड्स थे यही बताने थे. इफ यू हैव एनी डाउट तो बताइए, नहीं तो वरना आगे चलते हैं. क्रिटिसिज्म बता दीजिए कोई 2-4. अच्छा, समझ में आ गया? ये तो बता दीजिए. क्रिटिसिज्म आई विल टेल यू. यस सर. ठीक है, ओके. क्रिटिसिज्म देखो, सबसे पहले तो ये बात यही है कि चार्वाका जो है बाय रिजेक्टिंग इन्फरेंस, सबसे देखो मेन क्रिटिसिज्म पकड़ो. बाय रिजेक्टिंग इन्फरेंस चार्वाका आल्सो रिजेक्ट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ नोइंग इट्स फिलॉसफी. मतलब चार्वाक दर्शन क्या है, ये भी पॉसिबिलिटी जानने की खत्म हो गई, बिकॉज इन्फरेंस हैज बीन रिजेक्टेड. एंड व्हाई सो? बिकॉज how do we know Cārvāka philosophy? We listen to the words told by Cārvāka or what has been written by Cārvāka. We perceive these words and we infer about the theory of Cārvāka. ठीक है, मतलब हम चारवाक ने कुछ शब्द बोले हैं, उस शब्द को हमने सुना देखा, उसके बेसिस पे हमने इन्फर किया कि अच्छा चारवाक की ये थियरी है, और थियरी के बेसिस पे हम जान पाते हैं चारवाक को. So thereby it also rejects the possibility of knowing its own philosophy, because knowing also involves a kind of inference. Knowing the theory also involves a kind of inference only. So by rejecting inference, it also reduces the possibility of knowing the theory of Cārvāka philosophy. और बाकी तो है ही criticism कि he himself uses a lot of inference to reject inference, that what my opponents will say, जैसे कि यहाँ पे उसने infer किया है कि न्याय will say this, so I will counter it this way. So it is also doing a lot of inference, Cārvāka. Further, to again, if we restrict only to perception, then knowledge will become limited. It will be very much limited. टेस्टिमनी, इन्फरेंस, इनके बेसिस पे ही आज जितना भी नॉलेज, एलैबोरेट नॉलेज है, वो सब पॉसिबल हो पाया है. इवन द मटेरियल प्लेजर दैट वी आर एंजॉयिंग आल्सो डिपेंड्स ऑन कि ये जो हमने नॉलेज गेन की है. इसके अलावा भी कोई आर्ग्यूमेंट आप लोग लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं. बाकी ये मेन आर्ग्यूमेंट ये थे, क्रिटिसिज्म ये थे इसके. तो थियोरी ऑफ नॉलेज की सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने को 3 क्वेश्चन पता थे. हाउ फार वी कैन नो द रियलिटी, कहाँ तक जान सकते हैं हम, आप बताएं. कोई कहाँ तक जान सकते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर दे कोई. जहां तक हमारे 5 सेंसेस जाते हैं, 5 सेंसेस जहां तक पहुंच पाते हैं ना, वहीं तक जान सकते हैं, उसके आगे नहीं जान सकते. हाउ डज नॉलेज ओरिजिनेट एंड डेवलप? नॉलेज ओरिजिनेट्स इन सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट, सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल परसेप्शन. और वही चारवाक जैसे बाकी लोग बोलते हैं कि ओरिजिन कहाँ होता है इसका, सेंसेशंस में, और फिर सेंसेशंस के बेसिस में माइंड अपना काम करता है और आइडियाज बनाता है. राइट? व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज? ओनली परसेप्शन, others have been rejected. So you need to talk about these 3 fundamental questions जब भी एपिस्टेमोलॉजी की प्रॉब्लम आए. ठीक है, ये चीज आपकी बेसिक्स की डेप्थ दिखाती है. तो अब हम चलते हैं चारवाक के मेटाफिजिकल एस्पेक्ट पे. सी, ये सब चीजें मैंने वही इनसे ली है अपने दत्तात्रेय चटर्जी से. मुझे वो बुक्स अच्छी लगती है, स्पेशली फॉर जैनिज्म, चारवाक ये वाला पार्ट. पहली चीज क्या रिजेक्ट करेगा चारवाक? क्या बोलेगा कि द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ ओनली 4 एलिमेंट्स, अर्थ, फायर, वाटर एंड एयर. आकाश, that is ether, is rejected. Sorry, space is rejected.
rejects space. Why? Because it cannot be perceived. It cannot be perceived. तो यहाँ पे फिर उसका क्रिटिसिज्म होगा कि भाई स्पेस ही नहीं है तो फिर इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन कहाँ होता है। बड़ा ही एब्सर्ड थियरी उन्होंने दी कि इन्होंने स्पेस को नहीं माना। फिर इट सेज देयर इज नो सोल। यहाँ पे एक उसका सूत्र है चारवाक का, चैतन्य विशिष्ट देहा एव आत्मा। चैतन्य विशिष्ट देहा एव आत्मा। सोल इज नथिंग मोर देन अ कॉन्शियस बॉडी। चैतन्य विशिष्ट देह एव आत्मा। And what is consciousness? It says soul is nothing but more than a conscious body. And how consciousness comes? Epiphenomenalism. It is a byproduct of matter. It is a byproduct of matter. Example दिया था उन्होंने वाला beetle leaf है ना, beetle leaf, lime, nuts. इसको chew करने पे एक specific red color आता है, specific red color. The specific red color is not there in the ingredient, but whenever all four combine, the specific red color comes. So similarly, when four material elements combine, consciousness comes. There is epiphenomenalism, that is, it is the product of matter. And soul is not there, so there is no afterlife, there is no rebirth also. भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः. Once these four elements are dissolved, there is no returning to the world. वापस नहीं आना इस दुनिया में. तो लॉजिकल इसके कोरोलरी क्या है कि जितनी लाइफ है उसको मैक्सिमम एंजॉय करो. फिर there is no God also. Why no God? Because it believes in naturalism, that is Sabhavavad. Creation is naturalistic. There is a mechanism, mechanical explanation दिया है, यदृच्छवाद. Please use these terms, यदृच्छवाद, because it denies the existence of a conscious purpose. There is no teleology. ठीक है, जैसे ह्यूम रिजेक्ट करता है ना, फिलोसफी रिलीजन में you'll see टेलीलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को ह्यूम भी रिजेक्ट करता है कि ये जो टेलीलॉजी है, जो हमको लगता है पर्पस एंड ऑर्डर, दोनों चीज पे ह्यूम रिजेक्ट करता है कि ऑर्डर और पर्पस जो लगता है ना हमको यूनिवर्स के अंदर, कि जैसे वो पहले की वॉच एनालॉजी है कि वॉच को देख के हमको लगता है कि कोई वॉच मेकर होगा, कितना सिस्टम एंड ऑर्डर है वॉच के अंदर. बट सिस्टम इज एंड ऑर्डर इज व्हाट वी आवरसेल्फ अज्यूम. हम खुद अज्यूम करते हैं सिस्टम एंड ऑर्डर, ऐसा कोई सिस्टम एंड ऑर्डर है ही नहीं. और जो सिस्टम एंड ऑर्डर पर्टिकुलरली हमको प्राइमो फेसी भी परसीव होता है, इट इज अ नेचुरलिस्टिक. वो ट्रायल एंड एरर करके इतने सालों की जो एवोल्यूशन हुआ है उससे हुआ है. देयर इज नो कॉन्शियस प्रिंसिपल, नथिंग लाइक कि फॉर्म है, फॉर्म की तरफ चीज जा रही है. नो, सब ट्रायल एंड एरर चल रहा है. जो चीजें टिकती हैं वो बेटर होती जाती हैं. सो चारवाका इज पॉजिटिविस्ट. व्हाई पॉजिटिविस्ट? इट बिलीव्स इन पॉजिटिव फैक्ट्स, दैट इज ऑब्जर्वेबल फिनोमेना. ठीक है, तो गॉड हट गया, सोल हट गया, वर्ल्ड के अंदर ओनली 4 एलिमेंट्स. ठीक है, एथिक्स में क्या है चारवाक की? चारवाक की एथिक्स में ग्रॉस इगोइस्टिक हेडोनिज्म. ग्रॉस मतलब टोटल इगोइस्टिक मतलब सेल्फ सेंट्रिसिटी. हेडोनिज्म मतलब प्लेजर मैक्सिमाइजेशन. ठीक है, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी. In this ethics wala part, you can summarize those. This ethics is summarized in those 4 statements: यावत् जीवित सुखम जीवित, ऋणम कृत्वा घृतं पीबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः. If there is no पुनरागमन, why do we? देखो कांट ने क्या बोला था? Why do you have to believe in God? Postulate of morality, immortality of soul, postulate of morality. जो व्यक्ति immortality of soul में बिलीव नहीं करता, जो गॉड में बिलीव नहीं करता, वो क्यों मटेरियल प्लेजर को गिव अप करेगा? ठीक है, पॉस्टुलेट ऑफ मोरालिटी है गॉड, सोल, इमोर्टैलिटी. अगर आप इन पे बिलीव नहीं करते तो ऑब्वियसली आप किसी चीज से बिलीव नहीं करते. एथिक्स आपकी सिर्फ ये होगी. एथिक्स मतलब व्हाट इज राइट, द राइट थिंग टू डू. राइट थिंग टू डू क्या है चारवाक के लिए?
जो चीज प्लेजर मैक्सिमाइज करे, प्लेजर मैक्सिमाइज करे, ठीक है। प्लेजर मैक्सिमाइजेशन इज देयर पॉजिटिव एस्पेक्ट। नाउ सी चारवाक को हम अगर बहुत ही लिमिटेड सेंस में देखें तो हमको चारवाक में लगेगा कि बड़ा सेल्फ सेंट्रिक है, बड़ा ही है ना, इसमें नेगेटिव एलिमेंट है, मटेरियलिज्म ही है। बट कहीं ना कहीं चारवाक ने प्रोग्रेस के लिए भी बात करी थी। यहाँ तक कि मैं बता दूं, कौटिल्य ने साइट किया कि कौटिल्य ने कुछ चारवाक थे, उनसे अपनी स्टेट थ्योरी को डिराइव किया था कि स्टेट का जो मटेरियल चारवाक, आप देखोगे कि कौटिल्य ने अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया है कि मटेरियल प्रॉस्पेरिटी अगर हो जाएगी तो बाकी चीजें, यहाँ तक कि वो बोलता है कि मटेरियल प्रॉस्पेरिटी होना सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी जो पुरुषार्थ है, धर्म, मोक्ष, वो भी तभी पॉसिबल है जब स्टेट जो है प्रॉस्पेरस होगा, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी होगी। अगर डिसऑर्डर, केओस है तो कैसे आप बताओ कि कोई धर्म और मोक्ष भी प्राप्त कर पाएगा। तो चारवाक के कुछ पॉजिटिव एलिमेंट भी है, जैसे कि इंटरव्यू के लिए हम जब प्रिपेयर करते हैं तब चारवाक, क्योंकि इंटरव्यू पैनल जो है वो चारवाक के बड़े मतलब पूछते ही हैं हमेशा, और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन पूछते हैं चारवाक का, क्योंकि दुनिया नेगेटिव बोलती है और वहां पे भी ये बात होती है। कभी कोई क्वेश्चन आ गया तो यू कैन ऑल्सो से। और क्रूड चारवाक और कल्चर्ड चारवाक में जो फर्क है, क्रूड चारवाक जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेंट्रिसिटी की तरफ जाते हैं। कल्चर्ड चारवाक जो है वो एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन, स्टेट की प्रोस्पेरिटी, स्टेट जो है प्रॉस्पेरस होना चाहिए, जो राज्य है, और व्यक्ति को ये जो हमारे जो जितने भी यज्ञ हैं, सेक्रीफाइसेस, रिचुअल्स, इन सब से दूर रहना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, स्पेशली उस टाइम पे जब रिसोर्सेज की इतनी कमी थी। तो एथिक्स में आप ये वाली बात बोल दोगे, चार वाक्यों से इसका समराइजेशन कर दोगे। हाँ, लिबरेशन क्या है चारवाक के लिए? बृहस्पति सूत्र के अंदर लिखा हुआ है ये चीज, मरणम एव अपर्वगः, कि मरना ही मोक्ष है, बस मर गया और हो गया मोक्ष, इससे ज्यादा कुछ मोक्ष नहीं है। हमको क्या पता कि शंकराचार्य को मोक्ष मिला है कि शंकराचार्य, बस शंकराचार्य का नाम ही नाम चल रहा है अभी तक, और वो कहीं यहीं पे किसी चार भूतों में विलीन हो गए हो, हु नोस, कौन वेरीफाई करेगा इसको? वेरिफिकेशन पॉसिबल है नहीं है। सो सिंपल बात, मरणम एम अपर्वगः, बृहस्पति सूत्र के अंदर भी लिखा हुआ है। सो यू नीड टू, मैंने सिर्फ कीवर्ड यहाँ पे डाले बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन कीवर्ड, ठीक है, बाकी कहानी आप सबको पता है, सब कुछ है। अब मुझे बताइए किसी को चारवाक में प्रॉब्लम है तो हम जैनिज्म पे चलेंगे थोड़ा सा। हाँ, लास्ट के अंदर मैं क्रिटिक बताना चाहता था, जैसे कि चारवाक को का जब एथिक्स वाला पार्ट है ना, तो यू कैन मेंशन दिस क्रिटिसिज्म, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि आई विल शेयर दिस विद यू। जब भी एथिक्स वाला पार्ट है, क्रिटिकल पार्ट है, यू कैन मेंशन दिस कि इंडियन फिलोसफी वालों ने बोला कि चारवाक क्यों है ये लोग, व्हाई दे आर कॉल्ड चारवाक, बिकॉज चरवंते पुण्य पापादिकम वस्तु जातम इव इति चारवाक, मतलब चरवंते, चर गए वो लोग, क्या चर गए? पुण्य और पाप के बीच का भेद ही चर गए, कि क्या क्या पुण्य है और क्या पाप है, कोई पुण्य पाप नहीं होता, तो पुण्य और पाप के बीच का भेद ही चर गए लोग। इट्स ऑफ ऑल एथिकल एंड मॉरल कंसिडरेशन, चरवंते पुण्य पापादिकम वस्तु जातम इति चारवाकः, यू कैन मेंशन दिस वाला, तो इससे आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए कि क्या कोई इशू होता है, वरना जैन फिलोसफी चलेंगे। कोई ओके या फिर नो, कुछ भी बोलिए। ओके सर। सर एक पीवाईक्यू है 2020 का, मैं बताइए। क्लियर कर देता हूँ ग्रुप पे। ये सब टर्मिनल, ये सब जो अपने सूत्र हैं जो जरूर मेंशन कीजिए, ये आपके आंसर को डिफरेंशिएट कर देंगे हमेशा। Critically evaluate Cārvāka's rejection of Akash as one of the elements of reality and examine the criticism of transmigration of soul. ठीक है, सो आकाश को वो रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि they believe only in four sources,